हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों हम बात जो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं बेटा वो है इंटीग्रल एक्सरसाइज 7 ऑफ NCERT। ठीक ना? तो उस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट पार्ट है दैट इज अ मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और उसके हम लोगों ने करीब 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। Okay, so now we start from the question number 18. So if you are first time on this channel, so please subscribe this channel. So now we start the question from 18. So question number 18 is integrate dx upon in root of sine of cube x into sine of x plus alpha. So how we can solve this question? So simply here sine cube x, we cannot take complete sine outside from this square root. So if we express this expression dx divided by in root of sine of cube x in a bracket, write sine a plus b formula. So sine of a into cos b plus cos a into sine b. Okay, after seeing this, we take common of sine x. If we take sine x common, so what we obtain here, dx divided by in root of, if we take sin x common, so this one becomes sin raised to power 4x in a bracket sin x common, so we write here cos alpha plus here cos x and a sin x common, so divide by sin x, so we get here cot x into sin of alpha. Is this clear? Okay, now if we take sine raised to power 4x as a common from square root, so we get sine square and a sine square move to up. So we get here cosec square x dx. Is this correct? Because sine raised to power 4x common, so we get here sine square x and 1 upon sine square x is equal to cosec square x. Why cosec square x? Because of in this square root, we have cos alpha plus cot x into sin alpha. Okay, now differentiation of cot x is equal to cosec square x. So take all the term which is in square root cos alpha plus cot x into sin alpha is equal to, let here t square. Why t square? Because of square root. Now differentiate this one. Cos alpha differentiate 0, cot x differentiation of this cosec square x, and a sin alpha is a constant, and differentiation of x we write here dx and this one twice t dt. Clear? So now replace this one. The value of cosec square x dx is equal to, move sin alpha here, we get twice t divide by sin alpha dt of with sign of minus and divide by this value is equal to t. Now this t and this t cancel, minus 2 divided by sin alpha and this in square root dt. Now in integration of dt, minus of 2 divided by sin alpha and this one is a t plus c. Write the value of t here, we get the value of 2 by sin alpha. Okay, and in root of, because of t, the value of t is square this, so t is equal to cos alpha plus cot x into sin alpha and a plus c. So this one is the answer for this question. I hope all of you understand clearly. Okay, now we move to question number 19. Question number 19. Integrate
in root of, sorry, in root, no, this one is not in root. This one is sine inverse root x minus cos inverse root x divided by sine inverse root x plus cos inverse root x dx. So find this value, solution of this equation. Since we know that sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, so write the value of this. Here sine inverse, this one x and this one x. Sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So we put here pi by 2, so write here 2 by pi. Okay. Now cos inverse x also written as a pi by 2 minus sine inverse x. Cos inverse root x is equal to pi by 2 minus sine inverse root x. So put this value from here. So sine inverse root x minus pi by 2, and we get here plus sine inverse root x dx. Is this clear? Okay. Now 2 upon pi, and this one sine inverse x and a sine inverse x, we write here 2 times sine inverse root x dx, and this one minus pi by 2, right here pi by 2 from starting. So now minus pi by 2 is integrated as 2 by pi, and the integration of minus pi by 2, so minus pi by 2x plus 2 times integration of sine inverse root x dx. Okay, so let this value is equal to I, and we solve this one by separately. So I is equal to integration of sine inverse root x dx. So first of all, you substitute root x is equal to t or t square. So x is equal to t square. So dx is equal to twice t dt. Clear? So put here sine inverse root x is equal to t, and dx is equal to twice t dt, so 2 and a t dt. So now this question is solved by product method or solved by integration by parts. As we take here this one first and this one second. So by parts formula 2 times integration of first constant sine inverse t into integration of second, so t square by 2 minus integration differentiation of first, so right here 1 upon under root 1 minus t square. Is this clear? And integration of second, so t square by 2, so right here by 2 outside of this integration dt. Okay, now we have here multiply 2, so what we get here, sine inverse t into t square by 2 cancel out, and 2 this one cancel out also, minus of integration this one t square. So if write here this one minus, so minus put here minus sign, so this one plus and a minus t square. In this denominator we have root minus 1 minus t square, so add 1 and subtract 1 and divide by under root 1 minus t square dt. Is this clear? Just arranging this one. So this one sine t square sine inverse t plus of this one, separate this one. So what we get here, integration of in root 1 minus t square dt minus integration of 1 upon under root 1 minus t square dt. Okay, so t square sine inverse t plus what is the value of under root a square minus x square? Right here x by 2 under root 1 minus t square plus a square by 2 means what is a? A is equal to 1, so 1 by 2 sine inverse t. Okay, and a minus this one is a formula of sine inverse t. Okay, now arrange this one. Here we have half sine inverse t and this one complete sine inverse t, so right here minus sine inverse t. So this one t square sine inverse t
plus t by 2 under root 1 minus t square and a minus half sine inverse t. Okay. Now put the value of I at this place. So what we get here? After multiplying this one, so solution of this question, I write here, solution of this question is this one 2 by pi, multiply this one, so 2 cancel, pi cancel, minus x. So minus x plus, multiply this one, 4 upon pi and rest of all terms sin inverse root t from here. Sin inverse root t from here. So write t square. What is t square? What is t square? T is equal to t square is equal to x. So write here x. Sin inverse t. What is t? T is equal to root x. Plus t by 2 means root x by 2. Under root 1 minus t square means x minus half sin inverse root x and a complete plus c. So this one is the answer of this question. Okay, I hope you understand. Okay, now start this question. Now we start the question number 20. So now question number 20. So arranging this one. Question number 20. So what is this question? Integrate in root of, complete in root of 1 minus root x divided by 1 plus root x. Okay. So first of all, we eliminate square root from the numerator. So by rationalizing integration of in root of 1 minus root x, multiply again 1 minus root x by denominator and numerator. 1 plus root x and a 1 minus root x. What do we get here? From numerator, we get here 1 minus root x whole square. So after squaring, square root cancel out, so 1 minus root x in the numerator and the denominator a plus b and a minus b. So right here 1 minus x within root dx. Is this clear? Okay. Now separate this one. 1 upon in root of 1 minus x dx and a minus this one in root x upon in root of, we can write this one 1 minus root x square dx. Why square root of dx? Because of differentiation of root x is a root x format. Okay. So we check here what we can do for this question. For this 1 upon root x is this type, 1 upon root x. So 1 upon root x is a value of 2 times in root of 1 minus x and a minus x sign, take minus. And for this one, if we take root x as a t, so we cannot find the value of this. So for this question, what we can do, so let here in root of x upon under root 1 minus x dx. Nothing to do. Okay. So now what we do here, put x is equal to sine square theta. Okay, put x is equal to sine square theta. So dx is equal to 2 sine theta cos theta d theta. Okay, now replace this one. Let this one I. So I is equal to integration of root x is equal to sine theta divide by under root 1 minus x is equal to sine square theta means cos square theta. So we write here cos theta into 2 times dx is equal to sine theta into cos theta d theta. So cos cancel out. We get here 2 sine square theta d theta. Now change this one 2 sine square theta as a 1 minus cos 2 theta d theta. And now integrate this one, so we get a theta and a cos, integration of cos sine 2 theta divided by 2. Okay.
Now we have to change this value in the form of x. Okay, now simply theta is equal to, what is theta? So here sine theta is equal to root x. So theta is equal to sine inverse root x. Okay, so theta is equal to sine inverse root x minus sine 2 theta means 2 sine theta cos theta divided by 2. So sine inverse root x, 2 cancel. What is sine theta? Sine theta is equal to root x. And now what is cos theta? So cos theta means we know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos theta is equal to under root of 1 minus sine square theta. So sine square theta is equal to x. So under root 1 minus x in root of 1 minus x. Clear? So we get the value of I. So this value put in this place. So answer should be integration of in root of 1 minus root x upon 1 plus root x dx is equal to minus of 2 times in root of 1 minus x minus of sine inverse root x and minus to minus plus root x into in root of 1 minus x. We can take common in root of 1 minus x in root of 1 minus x. So what is left? Root x minus 2 minus sine inverse root x plus c. So this is the answer of this question. Okay. Now we start the question number 21. So question number 21 is integration of e raised to power x in value of in bracket of 2 plus sine of 2x divided by 1 plus cos 2x dx. So what we do here? So first of all you have to know that the formula f of x plus f dash of x dx integration of is equal to e power x f of x. तो we discussed already this property. So पहले क्या करना बेटा, इसे चेंज कर लेना है. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. First of all this one. So write this one. Integration e raised to power x in a bracket 2 plus what is sin 2x? 2 sin x cos x divided by 2 cos square x. Okay, dx. Now separate this one. E raised to power x in a bracket 2 by 2 cancel and a 1 by cos square means sec square x plus 2 cancel, cos cancel, sin by cos means 10x dx. And here differentiation of 10x is a sec square x. So write this one straight as a e raised to power x 10x plus c. So this is the solution of this question. Very easy. Now question number 22. 22 is a question. Question number 22. Okay. So question is a integration of x square plus x plus 1 divided by x plus 1 whole square and x plus 2 dx. तो अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर से ज़्यादा है बेटा, तो क्या यूज़ करना है? पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे इसे. तो पूरे सिस्टम को हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर और यह एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ होल स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम्स लिखना पड़ता है बेटा. तो ए अपॉन क्या लिखा? एक्स प्लस 1 लिखा प्लस बी अपॉन यह एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गया. ठीक है, इसका वैल्यू सॉल्व हो गई. प्लस सी के लिए एक्स प्लस 2 लिख दिया. ठीक है ना. अब इस पूरे क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है बेटा? ए बी सी को सॉल्व करना है. नॉट टेकिंग एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स के लिए क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस 1 आएगा और एक्स प्लस 2 आ जाएगा.
प्लस बी के लिए क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस टू आएगा, और प्लस सी का एलसीएम यहाँ आएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये एक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा तरीका ये कि हम लोग कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट बोल दीजिए, इसे सेकंड बोल देते हैं। इफ x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये सिस्टम जीरो हो जाएगा, दिस सिस्टम शुड बी जीरो, सो माइनस वन स्क्वायर, सो वी गेट हियर वन and this one minus 1 and a plus 1 is equal to this value 0, this value 0, so b times minus 1 plus 2 with it 1, so b is equal to 1, b is equal to 1. Now if we put x is equal to minus 2, so this system again gives 0, this system again 0, so minus 2 square 4 minus 2 plus 1 is equal to, at a minus 2 c times minus 2 plus 1 minus 1 square 1, so c is equal to 3, but a is pending, so multiply this one from second, बहुत ध्यान से देखना होता है, फ्रॉम सेकेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स मीन्स 3x प्लस टू आ जाएगा, प्लस बी के लिए x प्लस टू आ गया, प्लस सी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया, सो 2x प्लस वन आ गया, ठीक ना। अब कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेते, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है बेटा, a है, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का c है, c ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो a इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस सी मीन्स 1 माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। ये फायदा मिल जाता है, आप वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब इस वैल्यू को क्या करना है, हमें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, पुट इन फर्स्ट, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू व्हाट इज ए इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, b is equal to 1, तो 1 upon x plus 1 square, and a c, what is c? c is equal to 3, so plus 3 times x plus 2. Now we have to integrate this one, so integration sign, integration and integration, right here dx and a dx, okay. Now integrate this, minus 2, this one log of x plus 1, okay. This one is the integration of 1 upon x square. So 1 upon x square, so x power minus 2, integrate we have minus 1 upon minus 1. So minus 1 upon x, clear? So minus 1 upon x plus 1 is the integration. Plus 3 times, this one written as a log of x plus 2 and a plus c. So this is the solution of this question. Question number 22. Okay boys. तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस और 23 ले लेते हैं। इंटीग्रेशन दिया गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये जो प्रॉब्लम है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स जब भी पैटर्न होता है, तो एक्स की वैल्यू को हमेशा कॉस 2 थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स को क्या पुट कर देते हो, कॉस 2 थीटा। ध्यान रखिएगा, इसको हमने स्टार्ट से कर लिखना, तो इससे तुम्हें फायदा मिल जाएगा कि पेज हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे हमने काम किया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया अंडर रूट में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2, 1 प्लस, तो कैंसिल आउट हो गया, साइन इसका बाई कॉस इसका मतलब 10 हो जाएगा, ये कितना आ गया 10 थीटा आ गया, क्या आ गया 10 थीटा। तो ये अगर हम लोगों ने चेंज किया तो इंटीग्रेशन में क्या आया 10 इनवर्स, और ये पूरा का पूरा 10 थीटा हो गया। अब एक्चुअल में dx भी चाहिए, तो देखिएगा इसको रिप्लेस किया है ना, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस का क्या होता है साइन 2 थीटा इंटू 2 और डी थीटा, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते बेटा, क्या लिखा -2 साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा, और माइनस तो है डी थीटा।
अब ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर ले सकते हैं तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ आ गया थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। चीज़ों को ध्यान रखेंगे और चेंज भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो बेटा, बाई पार्ट्स। ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। -2 बाहर है, इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट एज इट इज कॉन्स्टेंट करना होता है बेटा, सेकंड को इंटीग्रेशन करना है तो कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और ये माइनस का साइन आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थीटा का क्या आएगा 1 आएगा, साइन को इंटीग्रेट किया तो कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड डी थीटा। ध्यान रखेंगे कॉस इंटीग्रेशन में आया तो ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके ना, अब इस पार्ट को कंप्लीट करते बेटा, देखोगे इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस होगा, थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या आएगा कॉस 2 थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका आ गया बेटा। अब चीज़ों को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिएगा एक्चुअली कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है। सो कॉस 2 थीटा की वैल्यू एक्स है तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, सो 2 थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू का हाफ कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो चीज़ों को रिप्लेस करते बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाफ कॉस इनवर्स एक्स आ गया। कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया, माइनस साइन 2 थीटा ये हाफ है। अब कॉस 2 थीटा की वैल्यू एक्स है बेटा, तो अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी तो आप लगाते ही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा बेटा, 23 का आंसर आएगा x/2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 ना, तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको केवल अरेंजमेंट से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन अ ब्रैकेट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स लॉग एक्स डिवाइड बाई दिया गया है एक्स रेज़ टू पावर 4 dx, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, अरेंजमेंट कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाता है। देखिएगा फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं तो उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकल गया तो एक्स बाहर हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ ये जो दिया गया लॉग, लॉग क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक ना। और माइनस में क्या है बेटा, माइनस में लॉग एक्स, ये 2 जो है एक्स की पावर में जा सकता है तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, डिवाइड बाय आपके पास क्या है बेटा एक्स पावर 4 है, ठीक है ना। और यहाँ डी एक्स तो है ही। इसके बाद देखते हैं बेटा एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब हो गया, नीचे नीचे क्या आ गया एक्स क्यूब हो गया, अंडर रूट आ गया 1 प्लस एक्स पावर सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं ये लॉग, ये m अपॉन n है बेटा, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब सारी सिस्टम को देख लीजिए बेटा, ये भी जो है अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, और ये लॉग देखा जाए तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है डी एक्स है। देखा इसका फायदा मिल गया ना, तो इसको हमें टी मानना बेटा, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमने टी एज्यूम कर लिया, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, डी एक्स आएगा इज इक्वल टू क्या लिखना डी टी। अब एक्स क्यूब और डी एक्स ये तो गायब हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, इसकी जगह क्या लिखा डी टी। ये जो वैल्यू होगी रूट टी हो गई और ये हो गया लॉग टी, हो गया ना। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। लॉग का डायरेक्ट होता नहीं इसलिए हम फर्स्ट लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं सेकंड ले देते हैं। ओके चलिए
तो माइनस का 1/2 हो गया। फर्स्ट लॉग टी एज इट इज कांस्टेंट। रूट टी का क्या होगा बेटा, t⁻³ डिवाइड बाई 3/2। ओके, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लॉग टी का बेटा 1/t डिफ्रेंसिएशन, और ये तो एज इट इज आ ही जाएगा, t⁻³ डिवाइड बाई 3/2 dt। ओके, नाउ इसे थोड़ा सा अरेंज कर दें, माइनस का 1/2 आ गया, इन अ ब्रैकेट ये 2/3 हो गया, 2/3 log t हो गया, और t⁻³ है, माइनस अगर t से t कैसे करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 2/3 आएगा, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा, रूट टी आ जाएगा, रूट टी dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या किया जाए, माइनस 1/2 है और ये वैल्यू है 2/3 log t, और t⁻³ माइनस 2/3, और t⁻1/2 है तो t⁻ क्या आ जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है ना, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब सारी वैल्यूज को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। अब t की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, t की वैल्यू आपके पास थी 1 + 1/x²। चलिए इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, -1/2, ये 2/3 log t की वैल्यू क्या है बेटा, 1 + 1/x² है। यहाँ पे t की वैल्यू लगा देते हैं, तो 1 + 1/x² पावर 3/2 है, माइनस इसे करेंगे तो 4/9 आ जाएगा, और t⁻³ मतलब 1 + 1/x² पावर 3/2। ठीक है, आप चाहें तो इसे कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर निकल आएगा, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, सो इजीली हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। ओके।